Hello students, now we will solve some numerical related to the Kirchhoff's law. So here we have circuits that containing cells and resistances. So in the circuit we have 3 cells, 10 volt, 50 volt and 30 volt of cells, and 3 resistances of 1 ohm, 2 ohm and 2 ohm, and we have to find out current in each wire. We have to find out current in each resistance. We have to find out the current in each resistance. ठीक है. So now you see here in this circuit there is no direction of the current. This is very important that I am going to say. In this circuit there is no current in the circuit, no direction of the current in the circuit that is given. So here we have to give the direction to the in the circuit. So how to give the direction, that you understand. So here here I have 50 volt, here 30 volt and 10 volt. You can start the direction of the current from any one of the cell. When we will get the result in the last, then I will explain what should be the direction of the current when we will calculate the values of the current. So here you start the direction of the current from any one of the cell. Suppose from this cell I am going to start the direction of the current, that is I1, that is the current coming from this cell, and let I2 current is coming from this cell. Whatever be the terminal, here negative terminal, here positive terminal. Here you know that the current will start from the positive terminal, but here we have the combination of the cells. So when we have the combination of the cell, then we can start the direction of the current from any one of the cell. But when we will calculate the value of I1 and I2, then I will explain what should be the direction of the current in the circuit. So let I1 and I2 be the direction of the current, and this is the point, this is the junction where both the current are meeting, and then through this junction the current will leave the junction. Current will leave this junction and it will pass through this resistance, that is equal to I1 plus I2. Okay, then this will flow up to B point. Then I1 will move toward this side and enter this 10 volt cell, and I2 will move this side, I2 and then enter this cell I2. Okay, this is now clear, I think. So now here we will apply the KVL, Kirchhoff's voltage law. So loop A, B, E, F, A. In this loop A, B, E, F, A, let I am taking my traversal of anti-clock traversal in the direction of the clockwise direction, in clockwise direction that I am going to take. So in this circuit, this is our first circuit. So in this circuit I am going to start from this cell. Here we have 1, 2, 3, 4 elements. So here we will get 4 terms in the equation. So first is plus 10 volt, because we are going from low potential to high potential. Then we are going to through this resistor. So we are going in this direction, current also in this direction, and there is a voltage drop. So here we will get a negative sign, then 2 I1 plus I2, then high potential to low potential, that is minus 30. Then here up, then from this resistor, so here we are going this direction and current also moving in this direction, so we will get minus I1, that is equal to 0. So we have 4 terms, 1, 2, 3 and 4. Now simplify it, we get here 2I1, 10 minus 2I1, that is minus 3I1, then minus 2I2 minus 30 is equal to 0. So we get here minus 3I1 minus 2I2 minus 20 is equal to 0. So this is our equation number 1. Okay, now in second loop, this is our second loop. In loop B, C, D, E, B. So this is our direction of traversal. So we are going to start from this cell. So that is plus 30 volt.
we are going in this direction, current is in this direction, then plus 2 I1 plus I2, then low to high potential plus 50, current in this direction, we are going opposite, then plus 2I2 is equal to 0. 1 2 3 4 1 2 3 4 terms we are having. So now after simplifying it, we get 2I1 2I2 plus 4I2 plus 80 is equal to 0. This is our equation number. Let's take 2 common. This is our equation number 2. Okay, now solving 1 and 2. Solving 1 and 2, we get, so minus 3I1 minus 2I2 minus 20 is equal to 0. I1 plus 2I2 plus 40 is equal to 0. Cancel. Minus 2I1 plus 20 is equal to 0. So we get I1 is equal to minus 10 amperes, plus 10 ampere. I1 that is of 10 ampere, plus 10 ampere. Okay, this is now I2. So we will get I2, I1 in equation number 2. I1 that is 10 plus 2I2 plus 40 is equal to 0. So 2I2 is equal to minus 50. So I2 is equal to minus 25 ampere. Minus 25 ampere. Now here we get I1 that is equal to plus 10 ampere. Plus 10 ampere. So whatever be the direction of the current we have given in the circuit, this is the direction of the current I1. That will remain the same. As we have given this direction toward this side, that direction of the current will be right. Now I2 is minus 25. I2 is minus 25. Now you see here in the circuit, I2 current is flowing toward this side, but it is minus 25. So this current this current should be toward this side, that is opposite. I2 that should be toward this direction. This direction I2 should be toward opposite direction, minus 25. Okay, and here I1 plus I2, so that becomes is equal to minus 15 ampere. Minus 15 ampere. That should also be in this direction, that is opposite to that of this direction, because I1 plus I2 we have taken in this direction, but minus 15 ampere is coming, that should be toward the junction. So here suppose I am making E junction, so I2 should be toward this side, I1 this side, and I1 plus I2 that is toward this side. This is the direction. This is the actual direction of the current in the circuit. If in the numerical the directions are given, then okay. Otherwise, if directions are not given, you start the direction of the current from any one of the cell that is of your desire. Okay. After calculating I1 and I2, if it is a negative, then direction of the current is opposite to that of a desired direction of the current that you have given in the circuit. I think this is clear to all of you. Thank you. Now student, take next numerical. So here we have this circuit where we have a resistance of 5 ohm, 30 volt cell, 10 ohm resistance, then this cell, then this resistance, and in the circuit from here 1 ampere current is flowing, and here 4 ampere current is flowing, and here we have a source voltage. Mean here we have connected any battery, that is the source of the current. From that source 1 ampere current is flowing. It means this potential, this terminal is at positive and this terminal is at negative. So what we have to find out, find the current in 10 ohm resistance. 10 ohm resistance here, in this resistance we have to find out the current, then value V1, this V1 we have to find out, then source voltage, this source voltage we have to find out. Okay, this is question is very complicated, but you have to understand. So you see here, देखो, in this circuit
1 ampere current is flowing, 1 ampere current is flowing, 1 ampere current is flowing. In closed circuit there is only one type of the current. So here 1 ampere current is flowing, 1 ampere, then here 1 ampere current will reach 1 ampere, and from here 4 ampere current is coming. Then this current will pass through this arm, CD arm. So this become 1 plus 4, that is equal to 5 ampere current. So current in 10 ohm resistance, that is equal to, the first part is okay, that is the current through 10 ohm resistance is 5 ampere. I think this is clear. Now find the value of V1. To find out the value of V1, this is, so you know that in this arm current is flowing, 4 resistance is given. In this wire current we know the current, the value of current and the resistance, and V1 we can find out by considering this loop. So second part is in D, E, F, C, D loop, and this is my direction of traversal, and I'm going to start from this cell. So we are going from low potential to high potential. So here plus V1. Then my direction and the direction of the current is same in this resistor, that is minus 6 into 4, because in this arm current is 4 ampere. Then we reach at this resistance. So my direction and the direction of the current both are same, then again negative sign. So here we get 10 into 5, here 10 into 5, that is equal to 0. So 1 2 3, 1 2 3. So V1, that is equal to, so V1 that is equal to 74 volt. This is V1. V1 is equal to 74 volt. Okay. Now our next step is we have to find out the source voltage. So you understand this point very clearly. You see here, देखो अब हमें क्या करना, find out this source voltage, and this source voltage that is equal to the potential difference VA minus VB. Let the potential at this VA and V, that is VB. तो ये potential क्या होगा, ज़्यादा होगा, that's why current is starting from this 1 ampere. करंट स्टार्ट करता हाई पोटेंशियल से, तो VA माइनस VB, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है. देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एंड से. इस एंड पे जो हमारा पोटेंशियल कितना है VA, ठीक है. यहाँ से अब यहाँ से जाते जाते हम कहाँ पहुँच गए, रजिस्टर के पास. रजिस्टर भी हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन जा रहे हैं. मान लो हम इस डायरेक्शन से इधर को जा रहे हैं, दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, हम इधर को ऐसे जा रहे हैं, ठीक है. हम भी इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर है. ओके, तो हेयर साइन क्या आएगा, नेगेटिव. दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1 into 5 विद नेगेटिव साइन. ओके, 1 into 5 विद नेगेटिव साइन. देन नेक्स्ट प्लस 30 हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है. देन वी रीच हेयर एट दिस पॉइंट. अब यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है. अब यहाँ से हम इधर जाएंगे, तो हम भी इधर जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर है, तो क्या आएगा माइनस 10 into 5. ओके, माइनस 10 into 5. देन लो टू हाई पोटेंशियल V1 प्लस V1, तो प्लस V1 दैट इज इक्वल टू 74 को फाइंड आउट कर लिया. देन रीच टू VB, तो यहाँ देखो इक्वल टू पोटेंशियल V. देखो ये पोटेंशियल, फिर ये पोटेंशियल सारा ऐड करके जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू VB पोटेंशियल होगा. ओके, दिस इज, देखो VA से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे. इसका मतलब यहाँ अगर मैं सपोज कोई भी पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट होता है, मान लो कोई भी एनी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, देन इसका पोटेंशियल होता है अपने पास क्या, देखो VA माइनस 5 इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ Z, दैट इज इक्वल टू VZ. देन VA माइनस VZ इज इक्वल टू, VA माइनस VZ इज इक्वल टू 5 आता है यहाँ, ठीक है. इसी क्लियर ना ये पॉइंट. अब इसी तरह हम प्रोसीड करते गए. हमने देखो यहाँ पे जाना, हमने पहुँचना B पॉइंट पे, तो यहाँ पे मूव करते गए करते और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल आ गया VB. ओके, दिस इज. अब देखो अब इसको सिंपलीफाई करते तो अपने पास क्या आएगा, देखो VA माइनस 5 प्लस 30 माइनस
50 plus 74, that is equal to VB. So VA is equal to this answer should be 25, that is equal to minus 49 is equal to VB. अब देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू 49 वोल्ट, ये आएगा आंसर। देखो VA इसको इधर लेके आएंगे माइनस VB, दैट इज इक्वल टू प्लस 49 वोल्ट। सो द पोटेंशियल अक्रॉस VA एंड VB इज इक्वल टू 49 वोल्ट। दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे मूव करते गए बिकॉज वी हैव टू गो टू पॉइंट B, तो दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। ओके, दिस इज, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये आंसर आ गया। आई थिंक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नाउ वन नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड रजिस्टर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द current in each of the branch. In every branch we have to find out the current and second potential difference between P and Q. This is a P point and this is Q point. In between P and Q we have to find out the potential difference. So same here, the direction of the current is not given. So start the direction of your own, and when we'll get the value of I1 and I2, then we'll come to know and then we will verify what should be the direction of the current in the circuit. So देखो, here we have three cell, 30 volt, 25 volt and 5 volt. I am going to start the current from 30 volt battery. So because 30 volt is a large potential, so I am going to start the I1 current from this 30 volt battery, and 25 volt battery also, because positive in the same direction, let it be I2 coming from this 25 volt battery. So both the current I1 and I2 will meet at this P point. P point is the junction. They both the current will meet, and the sum of I1 plus I2 that will flow through this 5 volt battery, because इसका जो पोटेंशियल है वो कम है, तो हमने स्टार्ट कर ली 30 और 25 दोनों ज़्यादा पोटेंशियल के हैं, तो हमने यहाँ से करंट आउट कर दिया और ये मूव करेगा थ्रू दिस रजिस्टर। I1 एंड I2 यहाँ मूव करेगा, ऐसे करके जाएगा। इस रजिस्टर के थ्रू भी कितना जाएगा, I1 एंड I2, I1 प्लस I2, ठीक है। अब इस सेल से I1 आ रहा है तो I1 इसमें इन कर जाएगा, और इस सेल से I2 आ रहा है तो I2 भी क्या कर जाएगा, यहाँ पे इन कर जाएगा, ऐसे करके देखो ये I2। नो, आई थिंक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नो टेक द लूप, I will take this loop. This is my first loop, anti-clockwise will move. So in loop we'll take this loop Q, P, Q, U, T and P, Q, U, T and P, and I'm going to start from this cell. So here plus 30 plus 30. अब देखो my direction करंट both are same, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन 3I1 here. अब देखो मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो विद माइनस I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गया हम I2 लो पोटेंशियल, तो -5। अब यहाँ पहुँच के देखो मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो आएगा -4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। देखो अब काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 30 माइनस 3I1 माइनस I1 माइनस I2 माइनस 5 माइनस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3I1 देन 4I1 देन 8 अपने माइनस 8I1 देन I2 minus 5 I2 minus 5 I2, then plus 25 is equal to 0. So we will get 8 I1 plus 5 I2 is equal to 25. This is our first equation. Okay, now go to second loop. This is our second loop, so I am going to start from here again. In loop
P Q R S P Q, P Q R S P Q. So in this I am going to start from here. यहाँ से start कर देता हूँ. Whatever be the element, I am going to start from here. So here plus 25, low to high potential. Then my direction and direction current both are same. तो क्या आएगा minus 2I2. Then here अब डायरेक्शन इधर को है, हम इधर जा रहे हैं. देन प्लस 3I1. देन लो टू हाई टू लो पोटेंशियल माइनस 30. देन दिस माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0. सो 1 2 3 4 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 टर्म्स. सो हेयर सिंप्लीफाई इट. 25 देन आएगा माइनस 5 2I2 minus 7I2 minus 7. देखो 2I2 and this 5I2, 7I2. then plus 3I1 is equal to 0. So we have equation 3I1 minus 7I2 is equal to 5, equation number 2. Now by solving equation number 1 and 2, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. देन देखो सॉल्विंग 1 and 2. सो देखो ये आ गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन 3I1 minus 7I2 इज इक्वल टू 5. और पहली इक्वेशन थी 8I1 plus 5I2 इज इक्वल टू 25. तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से. ओके, so we get 20I1 minus 35I2 plus 35 and not 35. इसको करना था, इसको ओके, इसको करना था 5 से और इसको कर दो 7 से, 5 and 7. now अपने पास आएगा 15I1 minus 35I2 is equal to 25. इसका आएगा 56I1 plus 35I2 then 175. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा 71I1 is equal to 200 and I1 is equal to 200 over 71. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन अपने पास आएगा 2.181 एम्पियर. देखो ये आ गया अपने पास I1 वैल्यू. It means I1 here positive. It means the direction we have given in the circuit, that is right. I1, that is right direction of the current because it is a positive. Okay. Now अब हम क्या करते हैं, देखो put I1 in any in equation number 1 में कर लेते हैं. I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा 8 into 2.81 then 5I2 is equal to 25. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 22.5 plus 5I2 that is equal to 25. So 5I2 is equal to 25 minus 22.5, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.5. then I2 is equal to 2.5 over 5 that is equal to 0.5 ampere current. ये होगा हमारे पास I2. It means the direction of the I2 is also right. That will coming from this 25 volt battery. If negative होता तो हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं. It means our desired direction in the circuit are right. So इस R में आ गया अपने पास I2 करंट. अब यहाँ पे I1 plus I2 करेंगे तो that will be यहाँ पे हम कर देंगे 2.81 plus 0.5, तो that is equal to 2.86 ampere current in this arm. Okay, so in this way we can find out the current in each arm. Now second part is what is the potential difference between P and Q. Is potential difference between P and Q we have to find out. So we will start from here VP. I am going to start from this VP. देखो कैसे करना हमने इसको. सेकेंड पार्ट ये देखो, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, VP, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P. देन देखो हम इधर मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ, देखो हम P से Q जाना, देखो तो अब हम इधर जा रहे हैं
यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पोटेंशियल है VP, यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, इस एलिमेंट में हम इधर जा रहे हैं बट डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो अपने पास आएगा यहाँ पे +3 और I1 की वैल्यू है 2.81। देख लो 3 रेजिस्टेंस है और करंट की वैल्यू I1 की कितनी है 2.81 एम्पियर। फिर यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो यहाँ जा रहे हैं हम हाई टू लो पोटेंशियल -30, ओके। फिर हमारा पॉइंट कौन सा है Q पे पहुँच गए तो इक्वल टू VQ। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब हम करते हैं, देखो सिंप्लीफाई VP, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 24 8.43 -30 इज इक्वल टू VQ। सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा VP माइनस 30 माइनस 8.43 दैट इज इक्वल टू 7521, तो अपने पास आएगा 21.57 दैट इज इक्वल टू VQ। सो VP माइनस VQ इज इक्वल टू 21.57 वोल्ट। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी अंडरस्टैंड करना। ओके, क्लियर दिस इज। सो this is the answer. So you do the practice of this numerical. Thank you.